All right, so dear student, now we're gonna read another poem of John Donne, and that is The Good Morrow. Yes, the title is The Good Morrow. So let me share the screen with you. Here we are. The Good Morrow. All right, so The Good Morrow or The Good Morning. All right, so the title uh, suggests that good morrow means that something has happened, or just something uh, awaken or awakening of something. So morning uh, indicates that something that someone or something has awakened, and someone has got the idea, and there's a eureka moment for somebody, and something has revealed or dawned upon. So that's the kind of awakening. All right, so let's read the poem, and then we get the idea that what the poet is talking about and what the title suggests. Okay, so let me read the poem. I wonder by my troth what thou and I did till we loved. Were we not weaned till then, but sucked on country pleasures, childishly or snorted we in the seven sleepers' den? It was so, but this all pleasures, fancies be. If ever any beauty I did see, which I desired and got, it was but a dream of thee. And now good morrow to our wakening souls, which watch not one another out of fear. For love all love of other sides controls, and makes one little room and everywhere. Let sea discoverers to new words have gone. Let maps to others words on words have shone. Let us possess one word, each hath one and is one. My face is thine eye, thine is mine appears, and true plain hearts do in the faces rest. When where can we find two better hemispheres without sharp north, without declining west? Whatever dies was not mixed equally. If our two loves be one, or thou and I, love so alike that none do slacken, none can die. So that's the complete poem. So now I'm gonna explain line by line. The first poem, I wonder by my troth what thou and I did till we loved. So the poet is starting or beginning his poem with a question, and it's a abrupt beginning, providing no context so whatsoever, that what's the background and what is the context. He giving no information. So he all of a sudden he started his poem by asking a question, and he says he is addressing to his beloved that uh, I'm surprised, and I have this question that uh, before we fell in love, what do we used to do uh, in the past? All right, कि माजी के अंदर वो एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले क्या करते थे. ऑलराइट, और ट्रस्ट का मतलब है ट्रूथ, ठीक है, सच्चाई में, ठीक है. सो he is addressing his beloved and asking a very simple question that before uh, they were in love, what they used to do. That's the question. Were we not weaned till then? All right, so we were like a child. We were, you can say, busy in childish activities. क्या हम नहीं थे? ठीक है, didn't we engage ourselves in childish activities? यानी हम मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले childish activities के अंदर indulge थे. But sucked on country pleasures. All right, we sucked on, we used to enjoy country pleasures, ordinary pleasures. All right, we were engaged in different activities, and we used to drive pleasure out of those activities. uh,
before we fell in love. Childishly, बच्चों की तरह, like kids, ठीक है, wildly, childishly, बच्चों की तरह, ठीक है, without considering what are we doing. All right, so that's kind of context he's building. Or snorted we, and we used to sleep and we make a noise. All right, snort कहते हैं when you sleep and you uh, give a noise. All right, in the seven sleepers den. Okay, this is an allusion. Uh, Allusion, allusion. Allusion mean historical reference. All right. So if the writer indicates or uses a reference, so we call that uh, in literature allusion. So he has used the allusion of seven sleepers den. It's basically a religious concept that uh, there were people who slept for many hundred years. ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, इवन इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी है. अगर आप इफ यू स्टडी कंपेनियंस ऑफ अल-कहफ, जो सहाबे कहफ थे, अगर उनका आप वाकया पढ़ें तो वो भी कई सौ सालों के लिए सो गए थे. तो सेम इससे मिलता जुलता मोर और लेस जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही एक स्टोरी है कि देयर वर सम पीपल हु गॉट asleep for many hundred years. कई सौ सालों के लिए वो सो गए. सो वो भी यही कह रहा है शायद कि वो यूज्ड टू स्लीप अ लॉट. मतलब क्या है कि यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि मैग्नीट्यूड क्या था स्लीप का, कि यूज्ड टू स्लीप अ लॉट, बहुत ज्यादा सोते थे. इट वाज सो, बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज भी. लेकिन ये जो सारी जो प्लेजर्स थी ना, these pleasures were superficial, all right, ordinary, unreal. ठीक है, ये इमेजिनेटिव थी, लेस इंटेंस थी. इन जो प्लेजर्स के अंदर एक्चुअल जो लव था उससे पहले हम मैरी मेकिंग में इन्वॉल्व थे, बट दैट वाज नॉट ट्रू लव. ऑलराइट, वो सारी फैंसीज थी, इमेजिनेशंस थी, ठीक है, वो अनरियल था, रियलिटी नहीं थी उस लव के अंदर, लव मेकिंग के अंदर, मैरी मेकिंग के अंदर. If ever and beauty I did see, which I desired and got, it was but a dream of thee. All right. So you are so beautiful. All right. So if I have dreamt anything, all right, or I desired, I got you, but still you were a dream. Your love was a dream. All right. Dream mean fancy, unreal. It was not true at its core. मतलब ये कोई रियल लव नहीं था, ट्रू लव फीलिंग्स नहीं थी. इट वाज जस्ट अ ड्रीम. तो जैसे ड्रीम होता है, ठीक है, ख्वाब होता है, एंड ड्रीम इज नॉट रियल. ऑलराइट, so dream is also based on fancies. So same is the case with your love, with your affection, with your pleasure. All right, so that's also not that was not you can say true love or true feeling. So this is the case. ये जो description है first stanza की, जो 7 line stanza है, तो इसके अंदर बेसिकली उसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, द सिचुएशन और द कॉन्टेक्स्ट बिफोर हैविंग एक्चुअल लव. ठीक है, ट्रू लव से पहले उनकी क्या सिचुएशन थी. एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. ऑलराइट, it has turned the table. Now good morrow for our awakening souls. Now we are awakened. All right, हम जाग गए हैं. All right, we are come out of deep slumber. जो हम गहरी नींद सोए हुए थे, हम उससे जाग गए हैं. It's the morning of our love. हमारी जो लव का है उसका मॉर्निंग हो गई है. मतलब क्या है कि मॉर्निंग में क्या होता है, यू गेट अप, ठीक है, आउट ऑफ स्लीप. आप सो के उठ जाते हैं ना, जब जाग जाते हैं, यू बिकम कॉन्शियस, बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ, बिकम कॉन्शियस. ऑलराइट, एंड इन स्लीप you don't know what is happening with you, but when you are awake you become conscious and you know what are you doing, and your senses are, you become full, you can say your senses are working, your function faculties are performing very well when you are awake. So same is the case with these
lovers. Now they are awake. They have got the idea of true feeling or true love, and their souls are waking now. All right. अब उनका जो ट्रू लव है, जो ट्रू सेंस है लव की, ठीक है, वो बेदार हो गई है, ठीक है. दे गॉट द आइडिया कि व्हाट इज ट्रू लव, व्हिच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर. ओके, अब क्या है, जब वो उनकी मोहब्बत जो है, वो ट्रू लव जो है वो बेदार हो चुका है, तो अब क्या है, दे हैव नो फियर. ऑलराइट, सो दे डोंट लुक एट ईच अदर आउट ऑफ फियर. वो किसी खौफ की वजह से मोहब्बत में मुबतला नहीं, एक दूसरे से कोई खौफ नहीं है, ठीक है, कोई सस्पिशन नहीं है, ठीक है. कोई उन्हें कह लें कि किसी चीज का फियर नहीं है. फॉर लव ऑल लव फॉर अदर साइड्स कंट्रोल्स, ठीक है. जो लव है, ठीक है, दैट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग. ऑलराइट, यानी मोहब्बत जो है वो हर चीज को कंट्रोल करती है. तो अब जो है वो लव जो है वो प्राइमरी सोर्स है देयर देयर कंफर्ट, देयर फॉर देयर सस्टेनेंस. ऑलराइट, फॉर देयर लव. तो लव एक फाउंडेशन है, और तमाम चीज़ों को, तमाम मनाजर को लव ही कंट्रोल करता है, ठीक है. अब उनको खौफ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, ठीक है. नाउ आपने, हमने पढ़ा था माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म वाला कॉन्सेप्ट. तो अब वो कह रहा है एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर. हमारा एक छोटा सा जो रूम है, ठीक है, इट इज अ होल वर्ल्ड फॉर अस, ठीक है. रिमेंबर जब हमने जो पढ़ा था सन राइजिंग, तो उसके अंदर वो जो बात करता है शायर जॉन डन, लेट मी कोट द डायरेक्ट कोट फ्रॉम हिज पोएम. So she is all states, I'm quoting, uh, she is all states and all prince I, nothing else is. Princes do but play us compared do to this. All right, all honors mimic, all wealth alchemy. All right, so nothing else is, यानी कि जो हमारा, जो हम, हमारी स्टेट है, जो हम वो मेरी जो बिलविड है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं प्रिंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमारी दुनिया के अलावा कोई दुनिया नहीं है. तो सेम इज द केस विद हियर, ही इज एक्सप्लेनिंग द आइडिया दैट जो आवर लिटिल रूम इज एक्सटेंडेड टू द होल वर्ल्ड. यानी कि हमारी जो छोटी सी दुनिया है, हमारी छोटा सा जो रूम है, हमारा जो घर है, वो पूरी दुनिया को इनकैप्सुलेट कर रहा है. There is another interpretation for that, that now after awakening, after getting the real sense of love, now we are the world for one, for each other, ठीक है. यानी हम एक दूसरे के लिए दुनिया है, ठीक है. यानी each of them is a word to other, एक, यानी कि एक दूसरे के लिए उनकी सारी दुनिया, कुल कायनात, ये जो है ना, वो एक दूसरे के अंदर है. Let's see discoverers to new words have gone, ठीक है. यानी जो सी डिस्कवरर्स हैं, ठीक है, उनको let them discover new words, ठीक है. Let maps to others words on words have some shown, ठीक है. उनको नए नए जो दुनिया है उनको आबाद करने दे, डिस्कवर करने दे, नए मैप्स ऑफ वर्ड जनरेट करने दे, ठीक है. और वर्ड आफ्टर वर्ड, ठीक है, उनको वो बनाने दे. मतलब क्या है कि होराइजन का की एक्सपेंशन है, यानी दुनिया की एक्सपेंशन है, यानी ये दुनिया और ज्यादा वसी हो जाए, जितनी मर्जी बढ़ जाए. लेट अस पोजेस वन वर्ड, ईच हैथ वन एंड इज वन. लेकिन व्हाट
we are gonna do that. हमारा जो जो वर्ड है, जो हमारा लव वर्ड है, जो वर्ड ऑफ लव है, ठीक है, जिसमें जो हम रहते हैं, ठीक है, हमारे लिए सिर्फ वही वर्ड है। हमारी दुनिया, हमारा जो वर्ड है, जो हमारी कुल कायनात है, वही दुनिया है बस हमारे लिए, ठीक है। लेट अस पोजेस वन वर्ड, और वन वर्ड कौन सा है? वर्ड ऑफ लव। ईच हैज वन एंड एवरीबॉडी, सो एवरीबॉडी मींस हियर कि बिलवड का भी एक एक दुनिया है, मोहब्बत की दुनिया, और उसके जो दूसरा है उसकी भी एक दुनिया है, एंड इज वन, और वो दुनिया क्या है? एक ही है, ठीक है। So we don't need another word, ठीक है। Let's see discoverers or um, other peoples to discover different words, but our word is word of love and we don't need another word. जितना मर्जी एक्सपैंड हो जाए दुनिया, हमारी दुनिया जो है हमारी अपनी मोहब्बत है, हमारा अपना जो घर है वही हमारी दुनिया है, ठीक है। एंड दैट इज वन, ठीक है, और वो एक ही है, ठीक है। सो दे डिजायर नो अदर वर्ड. So we are happy with our possession, with our possessing one word, all right, the word of love, where the lovers are united as one, all right, जहाँ पे ये जो lovers हैं ये एक है, ठीक है। And then he says, my face is thine eye. मेरा चेहरा आपकी आंखों के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि माय फेस इज रिफ्लेक्टेड इन योर आईज, यानी आपकी आंखों के अंदर मेरा चेहरा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। बिकॉज यू लव मी, ऑलराइट, एंड आई कैन क्लियरली सी माई सेल्फ, माई इमेज इन योर आईज, एंड दाइन इन माई अपीयर्स, ऑलराइट, एंड योर फेस अपीयर्स इन माई आईज, all right. So our faces or our images appear in each other's eyes. एक दूसरे की आंखों के अंदर हमारे जो हमारी जो appearance है, हमारे faces हैं, वो reflect होते हैं, ठीक है। And true plain hearts do in the faces rest, all right, or our feelings are simple, all right. Our hearts do possess simple feelings, all right, without any dishonesty. Our hearts are honest, all right, और उनका जो यानी दिल के अंदर जो feelings हैं वो plain है, simple है, true है. Where can we find two better hemispheres? And we are like two hemispheres, all right. Now the poet is comparing uh, themselves with the geology, all right. Hemispheres होती हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हेमिस्फीयर्स है। तो अब अपने आप को टू हेमिस्फीयर्स के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कि वी आर लाइक टू हेमिस्फीयर्स, और हेमिस्फीयर्स एक हेमिस्फीयर से दूसरी हेमिस्फीयर तक क्या है? अ कंप्लीट वर्ड, ऑलराइट। For example, north and west, when they combines together, they make a the complete world. एक पूरी दुनिया बनती है. So we are like two hemispheres, north and west. So when we combine together, we uh, when we combine together, so we give a sense of the whole world. हम ही पूरी दुनिया बन जाते हैं. We turn into a whole world. Without sharp north, without declining west, or our hemisphere is like there is no death and decay in our world. There is no death and decay in our world as far as love is concerned. ठीक है, यानी हमारी जो दुनिया है उसके अंदर ये जो यहाँ पे ना विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, ठीक है, इसका मतलब है डेथ एंड डिके, यानी जो हमारा वर्ड ऑफ लव है दैट नोज नो डेथ एंड डिके, इसको जो है डेथ और डिके का नहीं पता। ट्रू लव जो होता है दैट रिमेन्स फॉरएवर, दैट इज परमानेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो परमानेंट है, वो इटर्नल है, हमेशा रहेगा, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं, शेक्सपियर के सोनेट्स में भी यही बात की गई है, ठीक है। द सन राइजिंग के अंदर भी यही बात की है कि जो जो लव है दैट इज फिक्स्ड मार्क, दैट इज इटर्नल. Love alters not with this brief hours and weeks, but bears it out even the edge of doom. ये क़यामत के दिन तक चलता है.
अगर ट्रू लव हो तो उस वक्त, ठीक है, उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। जैसे ये सनराइजिंग में इसने कहा है जॉन डन ने, लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नोर क्लाइम नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। यानी वक्त के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ट्रू लव बेस्ड ऑन ट्रू फीलिंग्स, लव ऑफ सोल्स रिमेन फॉर एवर, दैट इज परमानेंट, दैट इज नॉट ट्रांजिटरी, जो है वो टेम्पररीली नहीं होता, ठीक है, वो परमानेंट होता है, जिसके अंदर जो है वो डिक्लाइन, डिके, डिस्ट्रक्शन नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। Whatever dies was not mixed equally. अगर कोई मर जाता है, ठीक है, अगर कोई कोई रिलेशन खत्म हो जाता है या ट्रू लव्स जो है वो वैनिश्ड हो जाता है, इसका मतलब था that they were not equally mixed, all right, so they were not like a hemisphere, यानी उनका जो ताल्लुक था वो 50-50 का नहीं था, टू हेमिस्फीयर्स नहीं था, ठीक है, दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, लव वाज नॉट ट्रू लव, फीलिंग्स आर नॉट ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, तो इसलिए उनका जो रिलेशन है वो खत्म हो गया। If our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die. If our two loves be one, all right. So if we love, if we assimilate, all right, and if we love uh, like true lovers, so thou and I, so we become one person, all right. Okay, remember he has given another example in his poem Valediction, Forbidding Morning, where he has connected lovers, two lovers with the compass, and where he says that although we are two legs, we are two legs of compass, but we are connected at one point. All right, so we always remain connected. All right. It doesn't matter how far away we are, but still we are connected at one point, all right. और वहां पे वो कहता है कि हम एक हैं, ठीक है, टू वन, टू बॉडीज वन सोल का कॉन्सेप्ट इसने दिया, तो यही बात यहीं पे कर रहा है कि इफ आवर लव इज ट्रू एंड जेन्युइन लव है, ट्रू फीलिंग्स है, लव सो लाइक दैट नन डू स्लैकन, ऑलराइट, so none can reduce our love or affection, none can die, we become mortal, sorry, we can become immortal, ठीक है, because love knows no death. If love is true love, then the lovers won't die, all right, and their love and the love and they become immortal, वो लाफानी हो जाएंगे, उनको मौत नहीं आएगी, ठीक है, परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है, अगर उनका जो लव है वो ट्रू लव है जी। So if they love each other equally and love is based on true feelings, that love will live forever. All right. And nothing can reduce their love. And they will be known for centuries by the way they loved each other, because their love was true, based on soul, spiritual love. All right. All right, so now you got the idea that whole poem is about spiritual awakening of lovers, spiritual awakening of lovers. So before uh, before actual love, they were, you can say, indulge in different activities that were not true. All right, that was childish activities at its core. And later on, when they have gone through a spiritual awakening, now their love has become true, spiritual, all right, and permanent. In the beginning, their love was kind of, you can say, uh, non-permanent, all right, temporary, like a dream, because that love was not based on true feelings.
that was not based on spirituality. All right, but later on, when spiritual awakening happened, then their love was become spiritual. All right, and it uh, immortal. All right. और राइट, तो इस पोइम के अंदर एक आपको यू यू सी अ डेवलपमेंट ऑफ थॉट कि इन द बिगिनिंग, शुरू शुरू के अंदर यानी थॉट का ख्याल की डेवलपमेंट हो रही है। इन द बिगिनिंग पोइम जो थी वो उसकी अगर डेवलपमेंट देखें तो जो लवर्स हैं दे आर loving each other in a childish way, all right, and they are, you can say, busy in worldly activities, and their pleasures were fancies, all right, and it was like a dream, okay. और उसके बाद क्या, ये उनकी ये फर्स्ट बिगिनिंग स्टेज थी उनकी। लेटर ऑन व्हेन दे डेवलप्ड, विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन दे डेवलप्ड, जब उनकी जो सोल थी वो अवेकन हो गई है, तो फिर उनको पता चला कि व्हाट इज ट्रू लव। और फिर आगे उसकी फर्दर जॉन डन जो है उसको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह जो है वो स्पिरिचुअल लव जो है, टू लवर्स जो है दे बिकम वन, और उन वो कैसे उनका लव जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड दे बिकम इमोर्टल, देयर लव बिकम इमोर्टल। तो वो सारा ये डेवलपमेंट ऑफ थॉट उसने बताई हुई है। ऑलराइट, सो तो अब देखें इसकी जो अल्यूजन है, जो सॉरी जो इसने मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं या कंसीट इस्तेमाल किए हैं, मेटाफिजिकल कंसीट्स, वो जियोलॉजी वो सॉरी जियोग्राफिकल ली हुई है, यानी हेमिस्फेयर से लिया उसने, उसका कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह मैक्रोकॉस्म इन माइक्रोकॉस्म का इस्तेमाल किया, हम इसके मुतालिक बात कर चुके हैं कि जो द ग्रेट है, जो द ग्रेट थिंग्स हैं उसको उसने स्मॉल में दिखाया हुआ। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना, let us possess one word each has one and is one and makes one little room and everywhere, यानी हमारा जो कमरा है that represent the whole world, पूरी दुनिया इसके अंदर समा, यही असल में दुनिया है। तो वो क्या है, ग्रेट चीज को उसने स्मॉल चीज में दिखाया हुआ है। जैसे मैंने उस दिन आपसे आपको बताया था कि वो जो शायद अंदौरी साहब की जो राहत अंदौरी साहब की जो एक पोइट्री है, एक कुछ अशार है कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब आसमां कितना बड़ा है, ठीक है, तो वो जमीन पर रख दो, जमीन तो बड़ी छोटी सी है, ठीक है, तो आसमान नहीं रखा जा सकता। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ग्रेट द ग्रेट थिंग्स इन द स्मॉल, कि बड़ी चीजों को छोटी चीजों के अंदर समोना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं उनकी एक वन ऑफ द सीरेंट फीचर्स दैट दे यूज मेटाफिजिकल कंसीट्स। और मेटाफिजिकल कंसीट्स यही होती है कि metaphysical conceits ये होती है कि when far-fetched ideas are yoked together by violence, जब एक far-fetched ideas, imaginary ideas, fanciful supposition जो है ना उसको जो है ना वो explain किया जाता है violence के थ्रू, जबरदस्ती। alright, okay, that's all about Good Morrow. If you have any question you can ask me.